Hello दोस्तों, welcome to another video tutorial. Today we will discuss about the double fertilization and triple fusion, and then we will discuss about the development of embryo. So first we will discuss it in English, then we will discuss it in Hindi. So half video contain English and half have an Hindi medium for both type of students. पिछली वीडियो में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उससे पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाकर के गिर जाते हैं और स्टिग्मा पर जाकर गिरने के बाद वो वहाँ स्टिग्मा पे उग जाते हैं। जब वो स्टिग्मा पर उग जाते हैं तो उनकी जर्मिनेशन जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। उनकी जो पोलन ग्रेन्स की जो जर्मिनेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है by various methods जैसे self incompatibility, pollen recognition, etc., which depend upon species to species. So, whatever the mechanism there implemented, when the pollen tube reached here at that point, that is the micropyle end. That is the micropyle end. Then it is guided to reach this egg cell. This is the egg cell. So here it is guided with the help of this synergids. First of all, synergids, and then it also helped by filiform apparatus. So filiform apparatus have two functions. One is to guide the pollen tube and another to provide nutrition to the egg cell. As the pollen tube reached near this egg cell, the synergids guided it to reach the egg cell, and the synergids disappears. As the pollen tube reached to synergids, it provide information to reach the egg cell, and synergy disappear or degenerated. Degenerated, we can say that degenerated or disappear. Similarly, during this process, the antipodal cells are also disappear. These cells are also disappear to provide nutrition at during the time of fertilization. The egg cell have these two secondary nuclei, which are also known as polar nuclei and polar nuclei and this egg cell. Now, as this tube reach to the egg cell, the concentration it changes. Concentration of pollen tube changes, and due to which it burst out. It is burst out, फट जाएगी. And as we know in last video, I told you when the pollen start to germinate, the germination of this pollen tube occurs from the vegetative cell. So first in this vegetative cell, the vegetative nuclei is in first, then it have two nuclei which one are known as the male gamete. One of them is known as primary and one of them is known as secondary. How to distinguish which one is the primary and which one is the primary one have little bit big size and the secondary have a little bit of small size in comparison to primary. So this pollen tube burst out here. This pollen tube burst out here and it released two pollen. First, it released primary, and during the process of pollen tube elongation, as it reached to the embryo sac, this vegetative nuclei is also degenerated.
it also undergoes degeneration. So there is only two nuclei. One goes to this and fertilize this egg cell, and the secondary nuclei goes to with this two polar nuclei of the central cell. So here the fertilization take place two time. How many time? Two time. One between the egg cell plus primary male gamete, and second one is the two polar nuclei and one secondary gamete. So this process is known as double fertilization because the fertilization take place two time. Okay. Now the egg cell and male gamete after fertilization developed into zygote. Developed into zygote. And this secondary polar nuclei and secondary male gamete plus two polar nuclei when they fertilize. So how many nuclei are they? 1n plus 1n plus 1n equal to 3n, and the fusion occur between the three nuclei. Fusion occur between the three nuclei. That's why it is known as ट्रिपल फ्यूजन. इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, which later on develop into endosperm. Develop into endosperm. Okay. So what happened next? As the fertilization is take place, one is converted into this, one fertilization between this and one fertilization between this. Okay. Now, so that process is known as triple fusion and double fertilization. What happened next? Let's see. Before development of further development of zygote, before further development of zygote, the development occur in the pen or pack. What is pen and pack? The structure produced from fertilization of two polar nuclei and secondary male gamete. That is triple fusion. So after just triple fusion, the cell is known as either pen or pack. So what happened there? This is the embryo sac, and this structure is produced after the fertilization, which is known as primary endosperm nucleus. Primary endospermic nucleus. So on the behalf of that is known as development of endosperm, क्या होगा? What happened next? This span divide by free nuclear division. Free nuclear division. What is the meaning of free nuclear division? A division in which no cell wall formation is take place. Cell wall formation is not take place, and nuclei divide by free nuclear division and occupied the whole structure. And it is mostly in liquid form. It is in liquid form. Best example suited for this the coconut
milk, or we can say नारियल पानी जो होता है, that is the liquid endosperm. Or such type of endosperm in which cell wall formation is known not take place is known as nuclear endosperm. Known as nuclear endosperm. Another second type is the this cell after fertilization of polar nuclei and secondary male gamete. The first cell is produced, which is known as the PAC, primary endospermic cell. This cell divide by mitosis and cell wall formation is take place first, then second, then third, fourth, fifth, sixth, and on the wall endosperm. Just after nuclei division, the cell wall is laid. The wall endosperm become cellular. So that is known as cellular endosperm. It is known as cellular endosperm. It is second type of endosperm. Now, what happened next? What happened next? This embryo sac, the pen is produced. Pen. This pen first divide by free nuclear division and produce a large number of free nuclei. And suddenly, towards the lower side, the from the lower side, from the base, the cell wall formation is take place. So half is cellular and half is nuclear. Such condition is arises, and this type of endosperm is known as halobial endosperm. So on the basis of this structure, three type of endosperm is found in the seeds of angiosperm. One is the nuclear endosperm, coconut milk, best sorted example. Second version is the cellular endosperm, which is found in all mostly seeds. And third one is the halobial, which is found in the monocots. Monocots. However, later or sometime after this nuclear also becomes cellular, but during the zygote development, it remain as an halobial form. So these are the endosperm. Now, as the endosperm formation is completed. Then the further development is take place in the zygote. So here we are seeing in diagram there is a zygote. This zygote divide by first mitotic division and produce two cells. So zygote develop into embryo. Zygote develop into embryo, and the embryo development is occur towards the micropylar end. So as this cell divided by the first mitotic division, uh, then the cell which is towards the chalazal end. This side is chalazal and this side is micropylar. ठीक है? So towards the chalazal end, the cell is known as basal cell, and towards the cell towards the micropylar is known as the epibasal or terminal cell बोलते हैं. Terminal cell. So two cells are produced. Then the cells toward the chalazal end further divided into one more third. Then the upper cell is known as a historial cell. Historium or historial cell. It have a characteristic feature of large vacuole. Large vacuole to suck the
nutrition, to suck the nutrition from the endosperm or nucleus. And the second cell which is cut from this basal cell is known as suspensor primer, known as suspensor, primary suspensor cell. And this will divide in longitudinal division and produce a tube-like structures which help in conduction. So it will divide like this and produce a conducting tissue. And the upper one converted into historium and lower one converted into suspensor. Okay. Now, what happened to the this epibasal cell? This epibasal cell divide first division and second division produce four cells. Now, these four cells, one division is also occurs towards the back side, and this become the eighth cell. And four only looked forward from the one direction. So isobilateral type eight cell stage. This is known as the proembryo. Proembryo. Now what happened? The proembryo, the cells of proembryo divide by periclinal division and produce 16 cells. The outer layer is known as dermatogen, which is produced by the due to the action of periclinal division. And again, the cells are further divided, and the embryo becomes 16 to 32 cell stage. 32 cell stage, known as the globular embryo. That is known as the this structure here we see is the globular embryo. Okay, which one is the globular embryo? Okay, now what happened? The cells of this zone from this zone stop dividing, and the cells of these neighboring cells start their division continue. इस तरीके से the cells of this division start remain continue division, and these cells of this central regions stop dividing, due to which this embryo looks like an embryo, heart, and this stage is known as heart-shaped embryo. This stage is known as heart-shaped embryo due to its look like a heart. Now, what happened? The further this division is continue, and the division with this region is stopped. So then this heart-shaped structure converted into a one more stage, that is known as torpedo. Torpedo. And this torpedo stage, it looks like a torpedo, like a water squid. Then it will convert it into two cotyledonous, one historium and suspensor. Then it is known as the mature embryo, like this. So mature embryo have root cap, radical, hypocotyle, epicotyle, plumule, and two cotyledons in a dicot plant. Now this plumule give rise to stem. This epicotyle first, if light is present, then it will germinate. Elongated, the cells of this epicotyle start dividing and push the cotyledons towards the light outside of the soil. And this hypocotyle start to divide, which push the radical into the deep to the soil. Radical then further divide and converted into root. So radical give rise to root and plumule give rise to stem. And hypocotyle and epicotyle. Epicotyle elongate the stem size, मतलब cotyledons, and the radical push the root inside the soil. And root cap protect the root. Root cap have very important feature. If root cap is break down, then the further growth of root stop. They could not penetrate. They lose the sense of
हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोट्रोपिक इंटरेक्शन स्टॉप. The root cap have many functions. Now, similarly, what happened in the monocot? Similarly, the monocot embryo divide, produce this type of conditions like this, like this. The division is similar. What is the difference? That is the root cap is further uh, protected by coleorhiza, and the cotyledon is single, which is known as scatulum, and the plumule shoot apex region is covered by another protective layer which is known as the coleoptile, which you see in when you put barley seeds during the Navratris. You find that the first leaf-like structure originated from these barley is scatul coleoptile. First is that leaf-like structure appendage appear is the coleoptile. Then we saw the scatulum, and similarly, Sotapax is originated from this. So uh, now we talk in Hindi. तो इस डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोहरा निषेचन और त्रिशल्यन, है ना. तो दोहरा निषेचन क्या होता है? जब परागकण आकर के पड़ता है स्टिग्मा के ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर, तो उसकी जो कायिक कोशिका होती है वो बाहर की तरफ उग जाती है. वो पहले पुरानी वीडियो में बता दिया गया है. तो उसमें 3 केंद्रक आ जाते हैं. एक होता है कायिक केंद्रक और 2 होते हैं उसमें नर युग्मक, जिनमें से एक को प्राइमरी प्राथमिक नर युग्मक कहते हैं और एक को द्वितीय यानी कि सेकेंडरी नर युग्मक कहते हैं. तो जब ये पराग नाल यहाँ तक पहुँचती है इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ बीजाणु द्वार के पास जब ये पहुँचती है, तो यहाँ पर जो इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं ये और फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि समुच्चय तंतु जो होते हैं वो इसको गाइड करते हैं परागनाल को और अंड कोशिका तक पहुंचा देते हैं. जैसी अंड कोशिका तक ये परागनाल पहुंचती है तो यहाँ की जो सांद्रता है वो अलग है, इसको देख करके फट जाती है. तो फटने के बाद तब तक जो कायिक न्यूक्लियस था वो भी मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और जो सहायक कोशिकाएं ये भी चली जाती हैं और जो ये एंटीपोड प्रतिविमुख कोशिकाएं ये भी खत्म हो जाती हैं इस कोशिका को खाना देते देते हैं. तो लास्ट में भ्रूण कोश के अंदर 2 तो ये पोलर न्यूक्लियाई बचते हैं और 2 बचते हैं हमारे, एक बचता है हमारा ये एग सेल. ठीक है. तो जो प्राथमिक जो गैमेट नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है, और जो दूसरा हमारा सेकेंडरी द्वितीय जो नर युग्मक होता है वो इन 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ फ्यूज कर जाता है. तो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया एक तो यहाँ पे हुई और एक यहाँ पे हुई, तो निषेचन 2 बार हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन. ठीक है. अब देखिए त्रिशल्यन क्या होता है. यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कितने न्यूक्लियाई हैं? 3 न्यूक्लियाई, 1 2 और 3. 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई के थे और एक नर युग्मक का था, और इन तीनों का जो गुणसूत्र संख्या है वो एन एन टाइप की है. तो तीन युग्म केंद्रक आपस में मिल गए, इसीलिए यहाँ पर इनकी प्लॉयडी भी कितनी हो जाती है? गुणसूत्रक संख्या 3n हो जाती है ना. और इसलिए इसको नाम दिया गया त्रिशल्यन, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का शल्यन हुआ है, 2 ध्रुवीय और एक मादा युग्मक, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन. अब देखते हैं आगे. अब जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पर 2 काम होते हैं. एक तो सबसे पहले मतलब ये तो जायगोट में बदल जाएगा यानी कि युग्मनज में बदल जाएगा, निषेचन के जस्ट बाद युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज, और ये बन जाएगा, ये बदल जाएगी पैन में, प्राथमिक भ्रूण केंद्र और प्राथमिक भ्रूण कोशिका. 2 तरीके से बनती है, ये डिपेंड करती है कौन सी पहले बनेगी. तो सबसे पहले जो होगा, जो ये बनी है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका या केंद्रक, इसमें पहला विभाजन होगा और ये पहले डेवलप होगा, उसके बाद युग्मनज में आगे की प्रोसेसिंग होगी. तो ये क्या करता है? 3 प्रकार के इसमें चीजें देखने को मिलती हैं कि जो केंद्रक बना है वो सिर्फ केंद्रक ही रह जाए और वो
मुक्त कोशिका विभाजन से डिवाइड करके बहुत सारे केंद्रक बना लेगा, और जो कि तरल अवस्था में होंगे। बहुत सारे जो केंद्रक बन जाएंगे ना, तो वो केंद्रक क्या करेंगे, ऐसे डोलें। तो जो नारियल पानी होता है, वो जो हम पीते हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियर भ्रूण पोष होता है, तरल होता है, जो उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है। तो केवल केंद्रक केंद्रक होंगे उसमें, तो उसको नाम रखा गया है केंद्रीय भ्रूण पोष। क्या बोलेंगे उसको, केंद्रीय केंद्रीय भ्रूण पोष। तो ये हो गया एक। तो अब दूसरी कंडीशन क्या होती है उसमें, कि जो ये पहला विभाजन, जब जो ये इनके बीच में निषेचन हुआ है, इस निषेचन से यहाँ पर कोशिका बन जाती है पहली, और ये कोशिका विभाजित करके पूरा एक ऐसे सेल वाला, मतलब पहली सेल बनी, पहली सेल में विभाजन हुआ तो एक से दो बन गई, दो से फिर एक और विभाजन हुआ तो चार बन गई, चार से आठ बन गई, आठ से 16 बन गई, और ऐसे करके इसने पूरे जो भ्रूण कोश था उसको कोशिकाओं ने घेर लिया है। तो इसको बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। जो नारियल की गिरी हम खाते हैं खूब, वो सॉलिड होती है, जो है ना, ठोस जो होती है, वो बन जाएगी इस तरीके की, तो उसको बोलते हैं सेलुलर या कोशिकीय भ्रूण पोष। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो पहली सेल है, वो बने, मतलब केंद्र की बनेगा उनके त्रिशल्यन से, और वो केंद्रक जो है वो विभाजित कर जाएगा पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। लेकिन उसकी जो नीचे की कुछ सेल होती हैं, उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, कोशिका भित्ति बननी शुरू हो जाती है, तो आधा नीचे वाला हिस्सा उसका सेलुलर दिखाई दे रहा है, यानी कि केंद्रक के साथ दिखाई दे रहा है, और आधा उसमें कोशिका वाला दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है हेलोबियल, जो मोनोकोट में देखने को मिलती है। मोनोकोट का मतलब कि एक बीज पर, जैसे मक्का मेज में, है ना, बार्ले, व्हीट, इन सब में हमें ये देखने को मिलती है अवस्था। तो इस तरीके से एक भ्रूण पोष का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूण पोष का। यहाँ से जो एक केंद्रक बना है, ये क्या बना देगा, भ्रूण पोष। जैसे ही भ्रूण पोष बन जाएगा, तो फिर अगला विभाजन जो होता है वो जायगोट में होगा, मतलब जो युग्मनज बना है उसमें होगा। तो युग्मनज में क्या होगा, जो युग्मनज है उसमें क्या होगा, तो युग्मनज की में एक पहला विभाजन होगा जिससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक ऊपर की और एक नीचे की। एक को बोल देंगे ऊपरी, एक को बोल देंगे निचली। तो जो निचली कोशिका जो है, भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बीजांड द्वार की तरफ होता है। तो जो सेल बीजांड द्वार की तरफ होगी उसको ऊपरी कोशिका बोलेंगे, और जो उसके विपरीत दिशा में होगी वो बेसल या निचली कोशिका कहलाएगी। तो जो निचली कोशिका है उसमें फिर विभाजन होगा, और विभाजन होकर के जो चलाजल एंड की तरफ होगी, चलाजल, तो उसमें विभाजन होगा, विभाजन होकर के वो दो सेल बना लेगी एक और, तो एक ऊपरी और एक निचली। जो ऊपरी सेल होगी वो थोड़ा अपना जो उसका रिक्तिकाएं होंगी उनको बढ़ा कर लेगी, और उसकी जो कोशिकाएं, वो एक चूसक कोशिका के जैसे स्ट्रक्चर में विभाजित हो जाएगी। और जो दूसरी कोशिका बनी थी उसमें से ये वाली कट करके, ये ऐसे लंबी लंबी कट करके एक और स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसका नाम होगा निलंबक। नीलंबक, और एक बन गया हिस्टोरियम यानी कि चूसक, है ना। अब जो नीचे वाली जो दूसरी ऊपर वाली कोशिका थी, एपीबेसल जिसको हम कहते हैं, जो कि बीजांड द्वार की तरफ थी, वो विभाजित करेगी, एक से चार कोशिका बनाएगी, चार से आठ बनाएगी। आठ कोशिका मतलब चार दिखाई देंगे एक साइड से, चार उसके पीछे की तरफ होंगी इसमें, तो आठ कोशिका बन जाएंगी। इसको बोलेंगे प्राइमरी भ्रूण। अब इसमें एक डिवीजन होगा घड़ी की दिशा की तरफ ऐसे, जिससे कि बाहर की एक परत कट जाएगी और एक अंदर की परत हो जाएगी। तो बाहर वाली परत को बोलते हैं डर्मेटोजन, जो कि त्वचा कोशिका बोलते हैं जिसको। और ये ऐसे कर करके डिवाइड करेगी, और डिवाइड कर करके 32 कोशिका बना लेगी, जो कि एक गोलाकार संरचना बन जाएगी, जिसको बोलते हैं गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण बोलते हैं। अब जो गोलाकार भ्रूण बना है उसकी ये बीच वाली यहाँ की जो कोशिकाएं, ये वाली, इनमें विभाजन
नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये वाली कोशिकाओं में विभाजन लगातार होता रहेगा, तो जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होती रहेंगी, तो ये ऐसे एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हृदय आकार भ्रूण। फिर उसके बाद बीच में एक और स्टेज आती है जिसका नाम है टॉर्पीडो, और ये लगातार डिवाइड होता रहेगा, तो ये एक पानी में पाए जाने वाला एक सिक्विड होता है, उसके जैसा आकार ले लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो। उसके बाद ये एक मैच्योर परिपूर्ण भ्रूण में बदल जाएगा। जब ये परिपूर्ण भ्रूण में बदलेगा तो इसके दो कोटिलिडन होंगे, एक इसके पास रेडिकल, एक इसके पास मूल गोप मूल, है ना, एक हाइपोकोटाइल, एक पल्म्यूल और एक एपिकोटाइल, बीच पत्राधार होगा। हम्म, और ये तना बनाएगा। प्लम्यूल वाला जो रीजन है, ये रेडिकल मतलब जो रीजन है, मूल मूल का निर्माण करेगा, और मूल गोप उसको रक्षा प्रदान करेगा। हाइपोकोटाइल का जो काम होता है वो इसको उगाने में, मतलब रूट को उगाने में मदद करता है, जमीनी में धकेलने के लिए। एपिकोटाइल का जो काम होता है वो होता है इन कोटिलिडन्स को, जो ये अ, क्या है, कोटिलिडन जो है, इनको बाहर की तरफ जमीन से बाहर धकेलेगा बाहर, ताकि ये हरे हो जाएं और फोटोसिंथेसिस करके उगते हुए बीज को खाना प्रदान कर सके। तो ये इस तरीके से इसमें मदद करेगा। सिमिलरली ये भी इस बनने का तरीका तो सेम ही है, बस यहाँ पे जो कोटिलिडन होता है एक बीजपत्री पौधे में, उसको स्कैटुलम बोलते हैं। स्कैटुलम, हिंदी और हिंदी दोनों में यही है, स्क्यूटुलम। और जो ये कह रहा था कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल क्या होता है, एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो सूट अपेक्स यानी कि तना परारोह परारोह को सुरक्षित रखती है। और दूसरा है रेडिकल, जो रूट है, इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ रूट के पास भी एक परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, तो एक कोलियोपटाइल और एक कोलियोराइजा, ये दो स्ट्रक्चर मोनोकोट में अलग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं कि कोलियोपटाइल क्या होता है, मोनोकोट में पाया जाता है, स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर, और कोलियोराइजा रूट के ऊपर पाया जाता है, जो कि एक मोनोकोट्स का करेक्टर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन और त्रि सेलन। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।